Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine and enjoying a healthy stay at your home. I welcome you all in this class. Let's proceed to complete our remaining chapter 13, which was electrostatics. I hope all of you are following all these instructions very vigilantly. Learning objectives of today's lesson: describe potential difference. Describe that capacitor is a charge storing device. Define capacitance and its unit. Derive the formula for the effective capacitance of number of capacitors connected in series and in parallel. Our first topic of today's lesson is electrostatic potential. Last lesson हमने एंड किया था ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? हमने कहा था कि एक रीजन में जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. और यूनिवर्सली हमने ये भी कहा था कि दो चार्जेस जब एक दूसरे के करीब पड़े हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point. कि किसी भी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना कि वो किस तरीके से मूव करेगा वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अब लेट्स सपोज कि वी हैव डन वर्क W in moving a positive charge Q from infinity to any certain point in the electric field. Then electric potential V at that point is given by V is equals to W over Q. Clear? Now from here we have concluded from this formula that electric potential is a scalar quantity and its unit is volt, which is equal to joule per coulomb. Joule per coulomb के क्यों equal है? Work is always done in joule and Q is the charge और charge हमेशा coulomb में होता है. So 1 volt is equals to 1 joule per coulomb. And how we define it? If 1 joule of work is done against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to a point which is in the electric field, then the potential at that point will be 1 volt. Whenever a charge is placed in a field, it always tends to move from a point of high potential energy to a point of lower potential energy. See the figure which is given you in this slide. A positive charge is to make move from higher potential to lower potential, from positive potential to negative potential. Whenever a charge is moving from a potential high to a potential low, it always releases some energy. There is always some work done which has to be done by the charge for making it move from higher potential to lower potential. And that work done or energy supplied by the charge is given as Q VA minus VB. VA minus VB is the difference between the two potential, higher potential and lower potential. So we define potential difference as the energy supplied by a unit charge as it moves from a point to the other in the direction of field is called potential difference between the 2 points. Now here a question arises that what happens if a positive charge is transferred from lower potential to higher potential. कि अगर हमारे पास चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज
वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करने की बजाय अगर वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है तो फिर क्या होगा वर्क डन। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा कि इफ अ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देन एनर्जी इज सप्लाइड बाय द चार्ज। वर्क डन चार्ज को करना पड़ रहा है। इसके कंट्रास्ट में अगर हम ये कहें कि चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, then we say that energy will be supplied to the charge to make it move from lower potential to higher potential. Next topic is capacitors and capacitance. What is capacitor? A capacitor is the device which is used to store the charge. Now, how it look like? एक capacitor कैसा होता है? A capacitor consists of two thin metal plates which are parallel to each other and separated by a distance. That distance can be any medium, that can be air, that can be sheet of some insulator, or that can be air. And that medium is known as dielectric, as you can see in the figure given in this slide. Now what happens if we join a battery with the capacitor? If a capacitor is connected to a battery, then battery transfers charge from plate B to plate A, so that negative charge accumulates on plate B and positive charge appears on plate A. From this thing we have concluded that charge Q, which is stored on the plates, is directly proportional to the potential difference across the plates. Q is directly proportional to V. Q is equals to CV, where C is constant of proportionality called the capacitance of the capacitor, and it is defined as ability of the capacitor to store the charge. एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है ये उसकी कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है. सो फ्रॉम अबव इक्वेशन capacitance C will be equals to Q over V, and the unit of capacitance is farad. We define farad as if 1 coulomb of charge given to the plates of capacitor produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then its capacitance would be 1 farad. अब फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए जब भी हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं या हमें कैपेसिटेंस गिवन होती है कैपेसिटर्स की, वो हमेशा स्मॉलर यूनिट्स में होती है, जिसमें हमारे पास मोस्ट जो कॉमनली यूज यूनिट है वो है माइक्रो फैरेड. उसके अलावा नैनो फैरेड में भी दी जाती है और पीको फैरेड में भी हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताई जाती है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि हम कैपेसिटर्स को किस किस कम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं. तो कैपेसिटर्स के दो कम्बिनेशन होते हैं, वेदर दे आर यूज्ड इन पैरेलल कम्बिनेशन और दे आर यूज्ड इन सीरीज कम्बिनेशन. कम्बिनेशन मीन्स कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ना. या तो हम पैरेलल तरीके से उनको जोड़ सकते हैं आपस में, और या फिर सीरीज यानी एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा. अब सबसे पहले हम पैरेलल कम्बिनेशन की तरफ आते हैं. पैरेलल कम्बिनेशन में आप तीनों कैपेसिटर्स को, जो आपकी बुक में फिगर दी गई है, आपकी स्लाइड में दी गई है फिगर, इसमें आपको 3 कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं, लेकिन आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 3 से थोड़े भी ले सकते हो. ठीक है. See the figure which is given to you in the slide. Okay, it shows that we have 3 capacitors and they are joined parallelly with a battery. ये तीनों कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल तरीके से बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है. अब आप इस पैरेलल कम्बिनेशन में देखो कि तीनों कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है
और तीनों कैपेसिटर्स की नेगेटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल अरेंजमेंट. Now let's see what are the characteristics and features of parallel combination. Why we use parallel combination? Number one, each capacitor connected to a battery of voltage V has same potential difference. जितने भी कैपेसिटर्स आप पैरेलली बैटरी के साथ ज्वाइन करते हो, सबकी पॉजिटिव प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और सबकी नेगेटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है. तो हम कहते हैं कि जितने भी कैपेसिटर्स ज्वाइन किए गए हैं, दे हैव सेम पोटेंशियल. V is equals to V1 is equals to V2 is equals to V3. Number 2, the charge developed across each plate of each capacitor will be different. लेकिन हर कैपेसिटर का जो चार्ज है वो अपना होगा. क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है. ठीक है. नंबर 3, the total charge. What be the total charge? So we say total charge Q, which is supplied by the battery, is divided among the capacitors. Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. Q is equals to C1 V1 plus C2 V plus C3 V. Taking V common, so Q over V is equals to C1 plus C2 plus C3. फोर्थ पॉइंट को एलैबोरेट करने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगी कि लेट्स सपोज हमें अपने रूम को एनलाइटन करने के लिए 50-50 वॉट के 3 बल्ब चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो 50-50 वॉट के 3 बल्ब नहीं मिलते. तो हमारे पास चॉइस होती है कि अच्छा एक 50 वॉट का दे दें और एक 100 वॉट का दे दें. दोनों तरीक़ों से 150 तो कंप्लीट हो जाता है. इसी तरीके से हमारे पास पैरेलल कैपेसिटेंस में होता है कि वी कैन रिप्लेस आवर पैरेलल कैपेसिटेंस विद एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर. कि अगर हमारे पास फिगर में हमें जो दिखाया गया है कि 3 कैपेसिटर्स हैं, अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स नहीं हैं उतनी कैपेसिटेंस के, तो हम 2 ले लें या हम 1 ले लें. लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 कैपेसिटर्स की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है. एक कैपेसिटर की है 3 माइक्रोफैरड, एक की है 4 माइक्रोफैरड और एक कैपेसिटर की है 6 माइक्रोफैरड. तो कलेक्टिवली मेरे पास कितने कैपेसिटेंस के 3 कैपेसिटर हैं? 13 माइक्रोफैरड की. तो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर ही ऐसा हो जिसकी 13 माइक्रोफैरड हो, तो उन 3 की जगह मैं उस एक को भी यूटिलाइज कर सकती हूँ ना. सो दैट इज आवर फोर्थ पॉइंट कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. कि अगर आपके पास 3 या 4 कैपेसिटर जो आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आपके पास कोई कैपेसिटर मिसिंग है, तो आप उन सब जो आपने इंडिविजुअल कैपेसिटर्स लिए हैं उनकी इंडिविजुअली सम कर लो कैपेसिटेंस. उस कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर ऐड कर लो. दैट विल बी ओके. नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ characteristic of parallel combination is the equivalent capacitance of a parallel combination of capacitors is greater than any of the individual capacitance. I hope that is clear to you क्योंकि ये फोर्थ पॉइंट की अकॉर्डेंस में आ रहा है. अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव सीरीज कम्बिनेशन. द मेजर डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन इज कि यू कैन सी द फिगर कि इन सीरीज कम्बिनेशन voltage which is applied to each capacitor is different because the 3 capacitors are joined with one another, not with one battery. एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव प्लेट के साथ अटैच है. दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ अटैच है. तो तीनों कैपेसिटर सीरीज कम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ना कि बैटरी के साथ. क्लियर? और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कहा था कि हमारे पास वोल्टेज सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंट है.
सीरीज में हम कहते हैं कि हमारे पास वोल्टेज डिफरेंट है बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. Clear? Now third and fourth point is same as in we have done in parallel. We have to calculate the voltage because that is different across each capacitor, and in fourth point we have to calculate equivalent capacitance. Clear? Our next topic is types of capacitors. हमारे पास different devices हैं. Different devices में charge को store करने के लिए हमें different sizes के capacitors चाहिए होते हैं. So we say कि capacitors have different types depending upon their construction and nature of dielectric used in them. There are three types of capacitors: fixed capacitor, variable capacitor, and electrolytic capacitor. Now what are fixed capacitors? Fixed capacitors are those capacitors whose capacitance cannot be changed, जिनकी capacitance change नहीं हो सकती. और capacitance कैसे change नहीं हो सकती कि हमारे पास जो दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको आगे पीछे मूव नहीं करवा सकते. दे आर फिक्स्ड ऑन अ पॉइंट. हमारे पास फिक्स कैपेसिटर की दो एग्जांपल हैं जो हम मोस्ट कॉमनली हमारी डिवाइसेस में यूज करते हैं: पेपर कैपेसिटर एंड मीका कैपेसिटर. सेकेंड इज वेरिएबल कैपेसिटर. वेरिएबल, आपको नाम से पता चल रहा होगा, हुज कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड, जिसकी कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. एंड थर्ड एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर. अब कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चार्ज स्टोर करवाने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होते हैं, ठीक है, और वो चार्ज तो स्टोर करते हैं लेकिन रिलेटिवली लो वोल्टेजेस पे, ठीक, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स. यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स. Capacitors are used for tuning transmitters, receivers, and transistor radios. They are also used in table fans, ceiling fans, exhaust fans, fan motors in air conditioner, coolers, and motor washing machines. Capacitors are also used in electronic circuits and computers can also be used to differentiate or separate high frequency from low frequency signals. What are the applications of electrostatics? There are major two applications of electrostatics which we use in our daily life. Number one, electrostatic air cleaner. Electrostatic air cleaner is used to remove dust particles from the air. And number two is electrostatic powder painting. And this is used to paint a car. Clear? What are the hazards of static electricity? Number one, lightning, and number two, fires or explosion. Lightning, बिजली गिरना due to static charge, ठीक है? It occurs due to a large quantity of electric charge which builds up in the heavy thunder clouds. And to prevent lightning from damaging tall buildings, lightning conductors are used. And the purpose of lightning conductor is to provide a safe discharge path for the large amount of negative charge in the air to flow from top of the building to the earth. Second is fires or explosions. Static electricity is a major cause of fires or explosions. At many places, we see in our daily life, हम अपनी अगर लाइफ से ही एग्जाम्पल लें तो हम बहुत सी एग्जाम्पल देखते हैं कि जहाँ पे आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हुआ था या बिजली की तार जो है वो टूट कर गिर गई थी, बहुत सी बातें हम सुनते हैं. A fire or an explosion may occur due to excessive buildup of electric charges produced by the friction. And if the static charges are allowed to discharge through the areas where there is petrol vapor, a fire
can occur. Thank you so much. I hope you have understood the lesson. Now, home task is given to you. You have to complete your task in time and you have to submit me your task till this Saturday through your images. Clear? If you have any query, any question about these topics, then we have meet class tomorrow. We will talk about them inshallah. And I hope I will be able to answer all of your questions.